Good morning everyone, this is Jyoti Gautam, your science teacher, and in our series of online lectures we are discussing about the metals and non-metals. In our previous lecture I have told you about the different types of metals, non-metals and the metalloids. I have mentioned that the metalloids are in the form of a zigzag line or a staircase, जैसे सीढ़ी नुमा होता है zigzag line, उसके फॉर्म में मेटालॉइड्स होते हैं, and they share the properties of both metal as well as the non-metals. In a periodic table you can easily find out that the green color elements, they shows the non-metal, and the purple one, they shows the metals. So metals are present in a periodic table on the extreme on the left side of periodic table. On the other hand, the non-metals, they are present on the right side. So I have also explained about how many different types of metals are present, how many different types of non-metals are present, total number of elements present in on the earth crust. Okay, then we'll be continuing this lecture with how do the metals and the non-metals they react. In our previous lecture I have discussed about the chemical properties and the physical properties, and under the chemical properties I have mentioned that the metals, they react with air, water in a different way as that of the non-metals. Metals generally they are reactive, and metals, they, how do they react? They react by losing their electrons. Yes, like when I have mentioned the metals, they are very good conductor of heat and electricity. At that time I have explained that the electron conduction in metal is very good. The flow of electron in metal is good, and this becomes the reason why they are good in electricity and why they are good conductor of heat as well. So the metals, they simply lose their electron and become positive. What will happen? Just as an example, suppose this is a sodium metal. Okay, and sodium metal की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 281. दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट शेल होता है के शेल, उस के शेल में हमारे पास कितने होते हैं 2, एल शेल में 8, हमारा क्या होता है के एल एम एन. होप यू आर अवेयर विद दिस के एल एम एन शेल ऑर्डर. के हमारा फर्स्ट शेल होता है, ये हमारा सेकेंड शेल होता है, ये हमारा थर्ड शेल, और ये हमारा फोर्थ हमारा ऑर्बिटल शेल होता है. तो सोडियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 281 होती है. मतलब जो के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे एम शेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है. सो व्हाट विल हैपन, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ अनस्टेबल है. अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज फॉर कंप्लीटिंग एन ऑक्टेट और फॉर बिकमिंग अ स्टेबल एलिमेंट, हर एलिमेंट को क्या चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, यानी कि उसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. कब? अगर वो शेल क्या हो, एल हो, एम हो या एन हो. अगर एल, एम और एन शेल है तो क्या चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर के शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. अगर के शेल है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन के अलावा अगर एल, एम एंड एन शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तभी वो एलिमेंट क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा. अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट क्या है, वो स्टेबल नहीं है. सो फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब होता है 8. So for completing it octet and for stabilizing itself, the metals and the non-metals, what will they do? They just either gain electron or lose electron. या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन करने से भी वो क्या कर सकते हैं, अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं और लूज करके भी कर सकते हैं. Now in case of metals, the metals they generally loses electron. वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. आउटर शेल जो है, सपोज करो सोडियम है, इसका फर्स्ट शेल, देन द सेकेंड शेल सोडियम का, एंड देन द थर्ड शेल. तो यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है. तो जो थर्ड शेल है इसमें हमारे पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है. सो व्हाट विल हैपन, जो ये सोडियम है ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, किसी और को लूज कर देगा, और इसके ये जो लास्ट शेल है ये रिमूव हो जाएगा, और उसके पास क्या बचेगा, इसके पास ये 2 शेल बचेंगे, फर्स्ट वाला शेल एंड सेकेंड वाला शेल.
एंड एज वी नो कि सेकेंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टेबल। ठीक है, तो इन दिस वे जो सोडियम है वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और खुद को स्टेबलाइज करता है। सिमिलरली लाइक सोडियम, अदर मेटल्स एज वेल दे ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम के साथ साथ, अब यहाँ पे क्या किया है सोडियम ने, 281 कॉन्फ़िगरेशन को 28 कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया, लूज कर दिया है। अगर सोडियम के अलावा अगर हम बात करें पोटेशियम की, लिथियम की, तो लिथियम में कितना होता है आपका, लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर है 3 और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 1। ओके, 2 and 1। तो 2 कौन से शेल में है, के शेल में, 1 कौन से शेल में है, एल शेल में। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, आइदर अगर एल शेल को स्टेबल करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, 7 + 1 8 हो जाएगा, सो द ऑक्टेट विल कंप्लीट एंड इट विल स्टेबलाइज इटसेल्फ। आइदर इट गेन 7 इलेक्ट्रॉन और इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। So gaining of 7 electron is a bit difficult task and requires a lot of energy. So the lithium, what it prefer, it loses its 1 electron. वो 7 electrons को gain करना is a tricky task, requires a lot of energy. On the other hand, losing of 1 electron is comparatively easy. तो metals क्या करते हैं, अपने last shell के electrons को lose कर देते हैं। इसका एक रीज़न और ये भी हो सकता है कि जो मेटल्स हैं उनके आउटर शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इन अ लेस अमाउंट, सो फॉर देम द लूजिंग इज इजी एज कंपेयर टू द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस विल हैपन विद ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, बी इट मैग्नीशियम, बी इट योर एल्यूमिनियम, even magnesium and aluminium they loses the electrons, lithium, sodium. Okay, then comes the non-metals. How do the non-metals they react? The non-metals they react by gaining of electron. Non-metal क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। The metals and non-metals they have a contradictory property. Metals they loses the electron and non-metal they gain electron. Okay, so while gaining electron they become negative. Negative कैसे बन जाते हैं, ये we can just understand this by a simple concept that if we are borrowing money from a person, हमारे ऊपर एक कर्ज आता है, ठीक है, कि हमें उसे रिटर्न करना है। कभी अगर हमें किसी से भी पैसे ले रहे हैं तो हमारे पास एक क्या आता है, एक नेगेटिव साइन आता है कि हमें वो रिटर्न बैक करना है। सो दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ओके, क्यों, बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो सोडियम है, नॉर्मल सोडियम इज 281 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब व्हेन सोडियम लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na पॉजिटिव। सोडियम क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव। सिमिलरली लिथियम क्या बन जाएगा, Li पॉजिटिव। पोटेशियम क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो मैग्नीशियम, यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम दे लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सो उनके ऊपर सिर्फ 1 चार्ज है, +1 चार्ज। ये 1 लिखना इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। बट मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे क्या आ जाता है, Mg+2। लाइकवाइज, ओके, सो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स यहाँ पर भी वही है एज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 287। ना अब 2, 8 और 7 जो है ये, इसमें जो 7 है, the 7 is present in the outermost shell and for chlorine it requires only just 1 electron is required for completing the octet, because we know 7 + 1 is 8 and 8 is a stable number. So this is K shell, L shell and M shell. So for M shell we know that 8 electrons are required for stabilizing the M shell. So 7 electrons already है क्लोरीन के पास, it requires 1 electron. तो यहाँ पर भी 2 possibilities बनती हैं, either chlorine loses the 7 electrons or gain 1 electron. Here also losing of 7 electron requires a lot of energy rather gaining of 1 electron. 7 electrons को lose करके stable बनना वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए,
as compared to gaining of one electron. So what will happen? The chlorine gain one electron and become electronegative. यहाँ पे क्लोरीन क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है. यहाँ पे Cl प्लस नहीं है, दिस इज Cl नेगेटिव. ओके, ये इस पिक्चर में Cl प्लस नहीं है, Cl नेगेटिव साइन है ये. जस्ट माइंड दैट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287 और क्लोरीन नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 288. यहाँ पे जो 8 है मतलब इट मीन्स द ऑक्टेट इज कंप्लीट. नाउ लाइक क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, they are also electronegative elements. यहाँ पर भी because fluorine, chlorine, bromine and iodine, they all are in the same row in the periodic tables, in the same group in the periodic table. So they all have one, they all needs to gain only one electron. ये सब क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. So they have -1 charge. Bromine, chlorine, fluorine and iodine, they all have -1 charge. On the other hand, if I talk about oxygen, sulfur, so they have -2 charge. Oxygen and sulfur, they have -2 charge. Why so? Because oxygen and sulfur, they gain 2 electrons. ये क्या करते हैं? 2 electrons gain करते हैं. ठीक है, तो इन पे -2 चार्ज आता है. सिमिलरली कॉन्सेप्ट इज सेम. व्हेन वी लूज 2 इलेक्ट्रॉन, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो +2 चार्ज आएगा. व्हेन वी आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स देन -2 चार्ज. Okay, when it is the losing of 3 electrons, then the +3 charge. When the gaining of 3 electrons, then -3 charge. Okay. Then comes the new concept of corrosion. अब corrosion क्या होता है? You must have heard about a word rust. Rust क्या होती है? जंग लगना सुना है आप सबने? See, जस्ट लुक एट टू दिस पिक्चर. इस पिक्चर में यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पिक्चर में ये जो आयरन की रॉड है, आयरन की पाइप है, ये बहुत ज़्यादा इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर हो गई है. नॉर्मल पाइप अपीयर्स लाइक दिस एंड अ रस्टेड पाइप वुड अपीयर लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या है? एक एक्स्ट्रा कोटिंग बन गई है. एंड दैट एक्स्ट्रा अनवांटेड कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड, किसकी कोटिंग? Fe2O3.10H2O. यहाँ पे डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. Fe2O3.10H2O. तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रस आयरन ऑक्साइड. हाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो. हाइड्रस आयरन ऑक्साइड की जब कोटिंग हो जाती है देन दैट इज नोन एज रस्टिंग और कोरोजन. सो कोरोजन इज द डैमेज कॉज्ड टू मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, moisture चाहिए ना, other gases as well. That is again optional, but oxygen and moisture, it's mandatory. So rusting, what will happen in case of rusting? In case of rusting, the presence of air and the presence of water or the moisture is must. So what will happen? An extra coating will develop. अब वो coating क्या होती है? धीरे धीरे आपके जो iron objects उनको क्या करती है? Weaken up करती है और वो गल जाते हैं धीरे धीरे. So here are some other types of rusting as well. The formation of brown coating of rust over the iron. Generally the iron objects, they develop iron oxide coating which is of brown color. Okay, so you can also mention over here as well कि यहाँ पे कौन सी coating है आपकी? iron oxide. वही Fe2O3.10H2 वाली. .10H2O. ठीक है, Fe2O3.10H2 ये वाली कोटिंग है एंड इट्स कलर इज ब्राउन. सो इट्स अ कॉमन रस्ट फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ऑल द आयरन ऑब्जेक्ट्स. देन अ ग्रीन कलर ऑफ कोटिंग डेवलप ऑन द कॉपर ऑब्जेक्ट्स. जो हमारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी, उन पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप होती है. वो कोटिंग किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की. ना हाउ विल द कॉपर कार्बोनेट फॉर्म? कॉपर कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है? जब व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से. आयरन की जो ब्राउन रस्ट है, हाउ विल इट फॉर्म? व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, सो इट फॉर्म हाइड्रस आयरन ऑक्साइड. देन द थर्ड टाइप ऑफ रस्टिंग इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सिल्वर. You must have observed the silver ornaments, जो silver anklet, it becomes blackish, it develops a black coating over it. So that black coating is of silver sulfide.
Now, how will silver sulfide form? Silver sulfide will form when the silver objects they react with the sulfur dioxide. Okay, so these are the three most common type of rustings observed: the iron oxide rusting, the copper carbonate, and the silver sulfide rusting. Silver sulfide rusting is very common. जो आपकी चांदी की पायल या चांदी के बर्तन होते हैं उन पे ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, ठीक है। आफ्टर अगर हम उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। वो किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। जो पूजा के बर्तन होते हैं, फिर कॉपर के जितने भी हमारी प्लेट्स या सब्सटेंसेस या मग्स होते हैं, उनमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। एंड आयरन रस्टिंग इज़ वेरी कॉमन, हमने ऑब्जर्व की हुई है कि कहाँ कहाँ होती है। जितनी भी पाइपलाइंस एंड ऑल जहाँ आयरन का यूज़ है वहाँ होती है। Now here is a very interesting activity for you all. Here shows we have taken 4 different test tubes और उन 4 test tubes में हमने क्या किया हुआ है, हमने different solutions लिए हुए हैं और आयरन की नेल डाली हुई है। आयरन की नेल मीन्स आयरन के कील डाली हुई है। एंड वी हैव taken different types of solutions and different environmental conditions to observe what rusting, कि जो आयरन है उसकी रस्टिंग किस तरह की होती है वो ऑब्जर्व करने के लिए। In our first test tube we have taken iron rod, हमने यहाँ पे क्या लिया? आयरन की एक नेल ली है और उसमें हमने क्या डाला है? एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम का क्लोराइड है, सॉरी नॉट कार्बोनेट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है हमारे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। ये क्या करेगा? ये एयर तो अलाउ है अंदर आना, ये हमने कॉर्क बाद में लगाया। एयर इज अलाउड टू रिएक्ट विद द आयरन नेल, बट just because we have put anhydrous calcium chloride, so it will absorb all the moisture from the surrounding. वो क्या करेगा? जितना भी water molecules है, moisture है, उसको absorb कर लेगा। Okay, so first condition में क्या होगा? We are having air but no water. Then moving on to the second condition. In second condition, we have added some distilled water, that to a boiled distilled water, but we have poured a layer of oil over it. हमने क्या किया? आयरन की नेल ली है, आयरन की नेल में हमने बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला है और उस बॉइल्ड डिस्टिल वाटर के ऊपर हमने ऑयल की लेयर बना दी है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन? ऑल्सो एयर इज ऑल्सो देयर बट एंड वाटर इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे पानी भी है और एयर भी है, दैट मीन्स मॉइस्चर भी है और एयर भी है। लेकिन द ऑयल लेयर, ये जो ऑयल की हमने लेयर यहाँ पे डाली है, क्या कर रही है? एयर और वाटर को मिक्स होने से सेपरेट कर रही है। एयर और वाटर की मिक्सिंग अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। इन थर्ड कंडीशन देयर इज एन आयरन नेल, देयर इज वाटर एंड देयर इज एयर एज वेल। देयर इज नो बैरियर, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, ना तो ऑयल है ना एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनेट कुछ भी है जो एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर को। तो इस कंडीशन में क्या है? हमने एयर भी डाली हुई है और मॉइस्चर भी है, ठीक है, वाटर भी है। सो एंड इन फोर्थ, जो हमने इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन NaCl। NaCl क्या होता है? हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। हमने नमक का पानी लिया है, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, वाटर का, मॉइस्चर है, एयर है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन 4 में से विच विल रस्ट एट अ फास्टर पेस? द फर्स्ट वन, इट विल नॉट एट ऑल रस्ट, इट वोंट शो रस्टिंग। व्हाई इट वोंट शो रस्टिंग? बिकॉज इन दिस वी डोंट हैव एनी मॉइस्चर, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई रस्टिंग नहीं होगी। In second, there is also no rust. Why there is no rust? Because again, though there is air as well as moisture, but there is a barrier which avoid the mixing of air as well as they avoid the connection of air and water. So यहाँ पर भी कोई rust नहीं है। Then the third one, यहाँ पे rust होगी। Why so? Because the iron object is in direct contact with air as well as the water. Now moving on to the fourth, यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत हाई इंटेंसिटी की, बहुत हाई लेवल की क्या हो रही है? रस्टिंग हो रही है। वाई सो? बिकॉज वी हैव एयर, वी हैव वाटर एंड वी हैव सॉल्ट एज वेल, NaCl. what will happen? This NaCl salt, NaCl or the sodium chloride solution will enhance the pace of corrosion. रस्टिंग की स्पीड को क्या कर देगा? वो स्पीड अप कर देगा। ओके, ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, वो क्या करेगा? रस्टिंग को फास्ट कर देगा। सो दिस इज द रीजन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जितने भी जो शिप्स होते हैं जो समुद्र में या सीज एंड ओशियंस में जाते हैं, उनमें जो शिप्स में रस्टिंग की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। क्यों? बिकॉज द सी वाटर इज सॉल्टी, कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। वहां पे एयर भी है,
और वाटर भी है, हमारे क्या है, सॉल्ट भी है, तो वहां पे जो रस्टिंग की प्रोसेस है इट इज कंपैरेटिवली मच फास्टर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी सर्च ऑन फॉर एन ऑल्टरनेटिव मेथड्स, कि हम क्या करें, ऑयल करें, ग्रीसिंग करें, सो दैट जो हमारे शिप्स में कम से कम रस्टिंग हो. दिस हैपन अगेन विद द ब्रिजेस एज वेल. जितने भी हमारे जो वाटर ब्रिजेस होते हैं, स्पेशली जो सी ब्रिजेस हैं, जैसे कि देयर इज वन वेरी फेमस ब्रिज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, लाइक इट्स अ मिराकुलस ब्रिज. बहुत पहले के टाइम पे वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, पंबन ब्रिज, दैट इज अगेन इन तमिलनाडु नियर द रामेश्वरम. पंबन ब्रिज, यू कैन इवन सर्च इट, दैट पंबन ब्रिज इज ब्रिज जो बिल्कुल समुद्र पे बना हुआ है, उसके इस साइड भी सी है, इस साइड भी सी है. एंड व्हाट विल हैपन इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स आती हैं तो दैट ब्रिज इट विल सिंक डाउन, वो उसमें डूब जाता है पूरा ब्रिज. व्हाट विल हैपन, दैट ब्रिज इज मेड अप ऑफ आयरन. वो जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा लोहे का बना है, और हवा और पानी का जो सॉल्टी वाटर है उसकी वजह से उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है. सो यस, दैट ब्रिज इज एक्सेप्शनल ब्रिज, जो इतने उसके बाद भी उस रस्टिंग को टॉलरेट करके अभी भी खड़ा है. बट येस, इट रिक्वायर्स अ हाई मेंटेनेंस. उसको टाइम टाइम पे उसकी क्या होती है, मेंटेनेंस होती है, पॉलिशिंग होती है, रस्ट को हटाया जाता है. सो yes, rusting is again a curse, so we need to protect our metals from its corrosion or rusting. What we can do, rusting can be prevented by applying grease or oil. Yes, if we apply a layer of oil or grease on our metals, be it your silver, be it iron or be it copper, so applying oil or metal avoids the contact of air and water. In our second test tube, आप देखा था हमने, जो हमारा सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो ऑयल है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देर इज नो रस्ट, देर इज एयर, देर इज वाटर, बट जस्ट बिकॉज वी हैव pour some oil, the rusting will not occur. Why? Because the oil separates the air as well as the water. So by applying oil or grease, we can prevent our metals from corrosion. Then applying paints, yes, we can also apply paint and varnishes. Then by galvanization, yes my dear students, this is a very important concept. Galvanization, this almost in every exam they do ask about what do you mean by galvanization. So galvanization is a process of coating iron objects or the metals with zinc. जब हम क्या कर रहे हैं, हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं अपने मेटल्स के ऊपर, जिंक की लेयर लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. एंड द कोटिंग ऑफ जिंक विल अवॉइड और विल प्रिवेंट आवर मेटल्स फ्रॉम कोरोजन. ओके, नाउ इफ वी आर कोटिंग, अप्लाइंग अ कोट ऑफ टिन, अगर हम टिन की कोटिंग लगा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम टिनिंग बोलते हैं. देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग. सो आई फर्स्टली एक्सप्लेन एलॉइंग. Alloying, what will happen, alloying, we mix up our different elements and materials to make a new third material. So उसकी जो शेल लाइफ होती है, उसकी जो रस्टिंग को अवॉइड करने की कैपेबिलिटी वो कंपैरेटिवली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ज़्यादा होती है. सो वी मेक alloys out of our normally present elements. So this is again a method to prevent them from rusting or corrosion. Then is the electroplating. What will happen, electroplating, electro means electrons, electricity, and plating means to coat. So by using electricity, by using electrons, we apply a layer, we apply a coat of less reactive metal. In our previous lecture, I have explained you about the reactive, moderately reactive and least reactive metal, like the gold, nickel, gold, chromium, silver, they are least reactive metal. And when they are least reactive, they won't react to that much intensity with water and air. So what will happen? We just simply, by using electricity, we just simply coat a layer of a less reactive metal like chromium. Okay, so this is electroplating. Now, question must be arise in your mind that apart from chromium, can we also apply a layer of silver? Or can we also use gold for electroplating? Yes, we do. You must have seen a lot of jewelry, इसको हम बोलते हैं gold plated jewelry और silver plated jewelry. तो उसमें क्या होता है, उसमें अंदर कोई और मेटल होता है, ऊपर से क्या होता है, हम बोलते हैं सोने का पानी चढ़ा है या गोल्ड का पानी, उसका सिल्वर का पानी चढ़ा है. So gold plated and silver plated jewelries or bangles are very common in the market, and they again uses the method of electroplating. उसमें क्या होता है, because gold and silver are
not at all reactive. In fact, gold is least reactive. Silver to somehow extent react with sulfide to form a, develop a blackish coating, but comparatively as compared to iron की comparison में silver कम reactive है. So what we can do, we can even apply a layer of silver on, but this is used in case of jewelry because they are the costly elements, so हम उनको jewelry case में ज़्यादा use करते हैं. Normally we prefer chromium because chromium is again least reactive. Okay, now comes the concept of an alloy. Alloy is a homogeneous mixture of metal with other metals and non-metals. Alloy क्या होता है? Alloy जैसे कि हमने compounds and mixtures के molecules के बारे में पढ़ा था, हम different proportions में combine कर रहे हैं. Same alloy में भी क्या होता है? Alloy में हमने एक metal को या तो दूसरे metal के साथ या फिर metal और non-metals के साथ combine किया हुआ है और homogeneously combine किया है. Here is a word homogeneous. Homogeneous का मतलब क्या है? Homo means uniform or same and hetero means different. So homogeneous मतलब हमने उसको इस तरह से combine किया है that we are not able to separate out its different components. It's homogeneously mixed. All the components are blended together in a perfect texture, perfect thing. So an alloy is a homogeneous mixture of a metal with other metals or a non-metal. For example, the steel utensils we do have in our kitchen. So steel is made up of iron plus carbon. What will happen when we combine iron with carbon? Its durability increases and shine also increases, as well as the steel won't corrode. जो steel है वो उसमें corrosion नहीं होता, इतना easily corrosion नहीं होता. Why so? Because यहाँ पे हमने alloy उसको बना दिया है. Steel is an alloy. And then comes the stainless steel. Stainless steel is even much better. It contains iron, carbon, cobalt and a trace of nickel as well. Then the brass, bronze. Brass and bronze medals सबने सुने होंगे. Brass it's made up of copper plus zinc and bronze is copper with tin. जब कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है. तांबा और पीतल बोलते हैं हम इसको. Then is the solder. When we combine lead with tin, then the alloy will be solder. There is one more alloy which is used for making aircrafts, that is duralumin. Duralumin एक alloy होता है जो हम aircrafts को बनाने के में use करते हैं. It is an alloy of aluminium. वो किसका alloy होता है? Aluminium का. So solder is used for welding electrical wires together, and if one of the metal alloy is mercury, it is called amalgam. Okay, amalgam is what? It's an alloy of mercury. Now here comes the difference between the metals and non-metals. We are on the summarizing part of our chapter. Metals, they have luster called the metallic luster. The non-metals, they don't have luster. They do not possess the metallic luster or the shine. Then the iodine and the graphite. Iodine and graphite, they possesses metallic luster. Mainly iodine possesses the metallic luster. Then metals, they loses electron and become electropositive. Non-metal, they gain electron and become electronegative. Hydrogen is the only non-metal that is electropositive. Hydrogen always form H+. जो hydrogen है H+ form होता है उसका. It's an exception. Then metals are generally good conductor of heat and electricity. Why so? Because electron flow is large, and non-metals are generally bad conductor of heat and electricity. Graphite is again an exception, जो क्या होता है हमारा? Good conductor होता है. Then metals are usually solid. Non-metals occur in all the three states. Bromine is in liquid state and rest are gases and solid state. In case of metal, the mercury is in liquid state. Rest are in solid state. Metal are malleable and ductile, a most important property, and have a very high density and reflect light. Yes, they reflect light, and that's why they have a very shiny surface. On the other hand, the non-metals, they are non-malleable, non-ductile. They have a less density and they do not reflect light. Okay. Then we can easily, stretch metal into wires. We can beat them into thin sheets. So sodium and potassium are metal those whose density is very less. उनकी density कैसी होती है? वो बहुत कम होती है, पानी से भी कम होती है. That means density का मतलब होता है घनत्व. So what will happen if you put sodium and potassium in water? They just float on. वो पानी में float करना शुरू कर देंगे.
Okay, I have also mentioned that sodium also reacts with water. So एक तो पानी में फ्लोट करके एयर के संग रिएक्ट कर देगा, इसीलिए हम उसको वाटर में स्टोर नहीं कर सकते. तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं सोडियम को? केरोसिन ऑयल में. Then metal with hammer, they emit a characteristic sound called metallic sound. Again, the sonority of metal. मेटल को जब हम हैमर से किसी भी चीज़ से बीट करते हैं तो क्या होता है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सी साउंड आती है मेटल की, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक साउंड या सोनोरस. वी कैन ऑल्सो से दैट द मेटल्स दे आर sonorous in nature. Metal क्या होते हैं? sonorous होते हैं. On the other hand, the non-metal, they do not emit any metallic sound and they are non-sonorous. So I just hope the difference between the metal and non-metal is clear to everyone. Then here are some non-metals and their uses, because it's important in your exam. पूछ लिया जाता है. Oxygen is used for breathing. Carbon, when mixed with oxygen, forms carbon dioxide, and carbon dioxide is used for what? It's used for photosynthesis. It's used for photosynthesis by the plants. So oxygen is used for breathing. Chlorine is used for purifying the water. Yes, chlorine in the form of bleach or in its pure form as well, it's used for the water purification. जितने भी जो आपके बड़े वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम ऑक्सी ब्लीचेस या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं. क्यों? बिकॉज क्लोरीन हैव अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, वाटर को प्यूरिफाई करती है. देन फॉस्फोरस इज यूज्ड इन क्रैकर्स. yes, apart from phosphorus, I'll mention there is one more, like strontium. strontium आप सबने मतलब देखा होगा, जो आतिशबाजी होती है, फायर क्रैकर्स होते हैं, उसमें फायर क्रैकर्स में जो सिग्निफिकेंट से ग्रीन एंड रेड कलर्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्शियम एंड बोरियम. Okay, then the non-metal like nitrogen, it is used as a fertilizer. Yes, the plants they require nitrogen, and इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, देन दे यूटिलाइज दैट फॉर देयर ग्रोथ. So nitrogen in the form of NPK also available as a fertilizer. NPK is nitrogen, phosphorus, potassium. So these three are the important materials or the elements which are required by the plant in a larger amount. So the nitrogen, it's a non-metal and used in fertilizer for plant growth. Then the graphite. Graphite is an exception, which is a good conductor of electricity. Then potassium, yes. NPK, the nitrogen, phosphorus, potassium. Potassium is also used in fertilizer because the plant growth depends on potassium as well. Nitrogen used by plant. Graphite is used in making lead. Yes, leads क्या होती हैं? आपकी पेंसिल की जो आगे की टिप होती हैं, जो हमारी पेंसिल्स होती हैं लिखने के लिए, ठीक है. काजल होता है, आईलाइनर्स एंड ऑल काजल, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे मेड अप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट. ये उसी के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. देन कार्बन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल. यस, carbon is also used as a fuel. Then bromine is used in dyes and pesticides. जो हमारे pesticides होते हैं, pesticides means substances which are meant to kill the pest. Side word का मतलब CIDE, side word का मतलब होता है to kill, and pest means unwanted insects. So pesticides में हम bromine को use करते हैं, and bromine is also used in other chemical reactions in chemistry as well. Now here comes a small a quiz of metal, non-metal and metalloids. There are 5 questions which are easy. This is for all your homework. Let us just discuss them. Elements that are normally in a gas form, they are dull, they are brittle and poor conductor. They are metal, non-metal, metalloids or gases. It's a very pretty easy question कि वो elements जो gas form में होते हैं, डल भी होते हैं, ब्रिटल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ना इट्स वेरी इजी. आपको मैंने बताया था कि मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सो यू कैन इजीली आंसर दिस. देन द एलिमेंट्स लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेयर स्टेप. स्टेयर स्टेप के फॉर्म में लोकेट होते हैं वो जो एलिमेंट, उनके लेफ्ट में. जो स्टेयर स्टेप है उसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट. ना यहाँ पे ये नहीं पूछा कि स्टेयर स्टेप वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं. सी द क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है. इसमें पूछा द एलिमेंट लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ स्टेयर स्टेप. ये जो जिगजैग लाइन आपको बताई थी पीरियोडिक टेबल में, इसके लेफ्ट में, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसके लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये पूछा है. सो यू कैन इजीली आंसर दिस. देन यूजुअली द सॉलिड एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर, malleable, ductile and shiny. Again a very easy question
कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में किसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. So you can answer this as well. Then the fourth question, the elements located along the stair step. हाँ, वो जो stair step है, ये जो zigzag line है stair step, इस पे कौन से एलिमेंट्स लोकेटेड होते हैं? मेटल होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, या नॉन मेटल्स होते हैं? यू नीड टू आंसर दिस. देन द एलिमेंट दैट कैन बी लस्ट्रस और डल, मैलेबल और ब्रिटल, एंड कंडक्टिविटी ऑल्सो वेरीज. मतलब वो एलिमेंट जो लस्ट्रस भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, मैलेबल भी हो सकते हैं, हार्ड यानी कि ब्रिटल भी हो सकते हैं, और उनकी कंडक्टिविटी भी डिफर करती है. सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स, सम आर बैड कंडक्टर्स. तो वो कौन से एलिमेंट हैं? आई हैव मेंशन्ड कि एक ऐसे एलिमेंट भी होते हैं हमारे पास जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं, वही आपको बताना है. सो यू ऑल नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस separately, individually. Use your own brain, use your own concepts, and answer them in your classwork copy. Then there are 5 more questions which I need to discuss because they have the most important terminologies. The first one is, what does the malleable means? What does the malleability means? The malleability or the malleable means ability to spread or to shape easily. Whenever we hammered a metal, it just shape down into thin sheets. So whenever we shape an object or whenever we shape an element into thin sheets, that property is known as malleability or malleable. Okay, what does the ductile means? So ductile means an ability to pull into thin wires. Whenever we draw any wire, whenever we draw any metal, it just spreads itself, draw itself into the form of thin wires. So उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? जब वो तार के फॉर्म में खिंच जाता है उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी. ओके, देन what does the sonorous means? Now sonorous and sound, they are same words. Sonorous means whenever we hit a metal, it produces a sound. When dings when hits, production of sound when it hits is known as sonorous. Now, what properties of metal allow them to be used as saucepans? Saucepans क्या होते हैं? हमारे normal frying pans जो हम cooking में use करते हैं, and we use the saucepans and frying pans just because they are a very good conductor of heat and strong. Why they are strong? Because we have learned about the property of metal that they are in hard. They are generally hard. They are not soft. If we leave the exception of sodium को छोड़ के अगर जितने मेटल को देखें तो क्या होते हैं? वो सब हार्ड होते हैं. So they are good conductor of electricity as well as they are hard. Then which property of metal allow copper to be used as wire? Yes, we do use copper for wiring. We do use copper for electrical wiring because it is ductile as well as it's a very good conductor of electricity. Okay, and it's a good conductor of electricity because the flow of electron is easy in case of copper. हम copper को ductile है तो draw भी कर सकते हैं पतले वायर के फॉर्म में, और electrical conductivity बहुत अच्छी है. This is the main reason. Now I hope this chapter is clear to everyone. Thank you so much. And if you come across any doubt, you can always ask me or you can post your question in your comment box. Thank you so much.